which spread like wildfire, and that where without, is it possible that when you give a and you claim that the attackers are from a certain country or are of a certain origin, to substantiate your claim, it really saddens us as victims of terrorism. Pakistan has, but we did not instantly react, because a responsible state acts like a responsible state by actually verifying information. And how is it that the Indian government did not know that these people were of Indian origin citizens? Every country has a national database through which facial recognition feature, it can be easily identified to which country a certain individual belongs to. There are retinal scans, there are fingerprints, there's facial recognition. There's so much technology in the world now that any database would have revealed where they were from. But unfortunately, there was a vicious campaign to instantly say that one of the attackers, the father, was a Pakistani national. Just because he had a name which is common in certain parts of the world. That is not enough. Having a name is not sufficient evidence to pin the blame on Pakistan. And you know, I appreciate how the Australian authorities have conducting themselves very, very professionally throughout the investigation, despite this vicious campaign which was run all over the international media. They did not cast any aspersions in this regard, and they actually waited for this information to be verified. And now it is clear that the attacker was from India, he migrated from India, had an Indian passport, traveled on that passport, the Indian embassy in Sydney issued that passport. Now, my question is, and I think I have this right to question, that who's going to cover the damage that was caused to Pakistan through these fake posts and false information? How do we go back to the position before the Bondi Beach, Sydney attack? Should we initiate legal proceedings? Should we request for an apology? Or will it just be part of history as a campaign based on to malign Pakistan? And we've seen acts of terrorism elsewhere in the world. The murder and assassination of Harjeet Singh Najjar in Canada is one example. We've seen transnational assassinations taking place. We've seen this incident. And we know that India supports terrorism in Pakistan. Time and time again, the DG ISPR, myself, we've placed evidence before you that the terrorism incidents taking place in Balochistan, the incident of terrorism taking place in Khyber Pakhtunkhwa, they have Indian funding, Indian backing. And there is irrefutable evidence to prove that. In addition to that, whenever the Afghan soil is used for attacks within Pakistan, somewhere there's an Indian link. And the Afghanistan government, which is cozying up to India these days, what is the main reason behind that? Do they have any bilateral trade? Do they have other areas of mutual cooperation of great potential which they want to realize? But there is irrefutable evidence of Indian terrorism taking place in Pakistan. And they've not only funded terrorists in Pakistan, they've been behind the planning of terrorist attacks in Balochistan and in Khyber Pakhtunkhwa. Now, a country which has been suffering from terrorism
since more than a decade. You know, we've laid down lives. Our soldiers, our jawans, our officers, our children, our professionals, our security personnel, our police. Every segment of society has played its part in countering terrorism. And we continue to fight this fight because we believe that we will be able to eradicate terrorism. And after so many sacrifices, to have this campaign run against Pakistan is really unfortunate. And a country from where this campaign originated, and most of the Indian outlets who aired this news without verification, they had no right to do this. Because their country is supporting terrorism and we are fighting terrorism. That's the difference between India and Pakistan. They've been behind most incidents of terrorism. And we've presented evidence time and time again. So I just wanted to highlight this vicious campaign against Pakistan, in which certain media outlets tried to malign Pakistan without verifying the information. And now that we have credible information, irrefutable evidence, coming in the form of a press release from the Indian police, coming in the form of the Indian passport being issued, coming in the form of the Philippine authorities confirming that this individual, the attacker, traveled to Philippines on an Indian passport. Now, how do you vindicate Pakistan in this? How do you say that we're sorry and this shouldn't have happened? But we're very sensitive on this issue because we've laid down more than 90,000 lives in this war against terrorism. And every other day, we continue to combat these terrorists. The Islamabad court premises case, the district court case, the handlers were arrested. I held a detailed press briefing on that, establishing an Afghan link and telling you how that attack was carried out. So you know where Pakistan stands for peace, Pakistan will always promote peace, and Pakistan will always condemn incidents of terrorism, but it is the responsibility of the media to act responsibly and pin the blame where it lies and verify the information and then disseminate it to the world at large through social media platforms, through television screens. And I think when I mention Hardeep Singh Najjar, when I mention these transnational assassinations taking place around the globe, that just shows you the true face of the Indian state. And the incident the other day where Chief Minister Nitish Kumar pulled down the veil of a Muslim woman, that just goes to show the mindset that is prevalent in that country with regard to extremism of any kind. So their society is absolutely disoriented. They don't have any narrative to sell to the world. They don't have any story to tell to the world. And all you can find within India is extremism of every kind being promoted. Because you have a government which believes in extremism, which believes in suppressing the minorities and their rights, and promoting terrorism and promoting extremism. That's it from my side, ladies and gentlemen, and I'll be open to taking questions to this particular topic, relevant to this topic. Yes, please. Either of you. So you were speaking about disinformation. Oh, sorry. वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्तौल्लाह तारार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा मुहिम में कई नामवर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिडनी फायरिंग हमले पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी बॉन्डाई हमले पर अफसोस का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक किया कि हमलावर अवल का ताल्लुक हैदराबाद भारत से। आज के दौर में किसी भी शख्स की शनाख्त के जदीद तरीक़ेकार मौजूद हैं, ऐसा कहना वफाकी वज़ीर इत्तलात का, जो कि इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा मुहिम में कई नामवर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। स्ट्रेटनिंग, कलर, कर्लिंग, क्या बालों में डैमेज बढ़ता जा रहा है? जस्ट पॉज एंड रिवर्स द डैमेज। न्यू डव इंटेंस रिपेयर
जिसमें है 8% बायो प्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार। बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage. Just pause, reverse, and hit play with new Dove Intense Repair. विंटर्स में ड्राई स्किन नरिश करो विद पॉन्ड्स बॉडी लोशन। इसका डीप एक्शन फॉर्मूला गहराई में जाकर स्किन को नरिश करता है। यही नहीं, पॉन्ड्स लोशन खरीदने पर मिले 100 तोला सोना जीतने का मौका। बॉटल पर दिए गए लेबल को पील करें, QR कोड स्कैन करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टाइम टू मेक मिरेकल्स हैपन। Slow melting, smooth coating, long lasting. It could only be Cadbury Dairy Milk. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. I adjusted, yes, let's go. दो दूनी दो चार चांद मेरा क्रंच, फ्लेवरफुल चिप्स चीट टोस्ट करे मंच, मजे भरपूर कभी नहीं रुकते, कभी सीन रखूं टाइट कभी फ्रेश करे पफ। सवाल मेरा एक इधर कौन लाइक अस, आप तो हैं दो कोई नहीं नो वन, अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो, मेक द राइट चॉइस there's so much to munch। ओशन सफारी है मजा तो जारी है, too much to munch, मिले जो बाइट वो बाइट सब पे भारी है, too much to munch। विंटर्स में ड्राई स्किन नरिश करो विद पॉन्ड्स बॉडी लोशन। इसका डीप एक्शन फॉर्मूला गहराई में जाकर स्किन को नरिश करता है। यही नहीं, पॉन्ड्स लोशन खरीदने पर मिले 100 तोला सोना जीतने का मौका। बॉटल पर दिए गए लेबल को पील करें, QR कोड स्कैन करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टाइम टू मेक मिरेकल्स हैपन। दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बर्फ पहुंचा रहा है हर खबर बोल न्यूज। विंटर्स में ड्राई स्किन नरिश करो विद पॉन्ड्स बॉडी लोशन। इसका डीप एक्शन फॉर्मूला गहराई में जाकर स्किन को नरिश करता है। यही नहीं, पॉन्ड्स लोशन खरीदने पर मिले 100 तोला सोना जीतने का मौका। बॉटल पर दिए गए लेबल को पील करें, QR कोड स्कैन करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टाइम टू मेक मिरेकल्स हैपन। डालडा कॉर्न ऑयल। इस 100% प्योर कॉर्न ऑयल में कुदरती तौर पर शामिल हैं फाइटोस्टेरॉल्स, जो दिल को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाए। डालडा कॉर्न ऑयल सिर्फ हेल्दी नहीं, हार्ट हेल्दी। जहां ममता वहां डालडा। नहीं, आपको बुखार तो नहीं हो रहा है? मैं ठीक हूँ। ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। क्या किधर? यार अम्मी की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। बाकी काम कल से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी चले, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैं तो डॉक्टर को दिखा भी चुकी हूँ। बराबर वाली ने बताया था, ऐप से ही डॉक्टर मिल गया। तो अम्मी उसने कोई दवाइयाँ तो लिख कर दी होंगी, मुझे दे मैं लेकर आता हूँ। ये मैंने अपना क्लिनिक से दवाइयाँ भी मंगवा ली है। वाह अम्मी। सेहत का मामला हो तो किसी का इंतजार नहीं करते। अपना क्लिनिक से घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट करें और साथ ही दवा भी ऑर्डर करें। तो डाउनलोड करें हर घर का अपना क्लिनिक। क्या लाइट क्रीम दे सकती है डीप मॉइस्चराइजेशन? न्यू पॉन्ड्स हाइड्रा मिरेकल लाइट मॉइस्चराइजर सेरामाइड प्रो और विटामिन ई के साथ। इसका लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मूला मॉइस्चराइज करे 10 लेयर्स डीप तक बिना चिपचिप। फॉर अल्टीमेट सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, miracles happen. I adjusted, yes, let's go. सवाल मेरा एक इधर कौन like us, जवाब तो हैं दो कोई नहीं no one, अगर नहीं चीटोस तो हम करें zero, make the right choice there's too much to munch, too much to munch, too much to munch, too much to munch। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। विंटर्स में ड्राई स्किन नरिश करो विद पॉन्ड्स बॉडी लोशन। इसका डीप एक्शन फॉर्मूला गहराई में जाकर स्किन को नरिश करता है। यही नहीं, पॉन्ड्स लोशन खरीदने पर मिले 100 तोला सोना जीतने का मौका। बॉटल पर दिए गए लेबल को पील करें, QR कोड स्कैन करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। टाइम टू मेक मिरेकल्स हैपन। डालडा कॉर्न ऑयल। इस 100% प्योर कॉर्न ऑयल में कुदरती तौर पर शामिल हैं फाइटोस्टेरॉल्स, जो दिल को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाए। डालडा कॉर्न ऑयल सिर्फ हेल्दी नहीं, हार्ट हेल्दी। जहां ममता वहां डालडा। स्ट्रेटनिंग, कलर, कर्लिंग, क्या बालों में डैमेज बढ़ता जा रहा है? जस्ट पॉज,
and reverse the damage. New Dove Intense Repair, जिसमें है 8% बायोप्रोटीन फ्यूजन, पाकिस्तान में पहली बार बालों की गहराइयों तक जाए and reverses up to 3 years of damage. Just pause, reverse and hit play with New Dove Intense Repair. आया चेस्टर यस लेट्स गो तो यार मेरा एक इधर कौन लाइक अस जवाब तो है दो कोई नहीं नो वन अगर नहीं चीटोस तो हम करें जीरो मेक द राइट चॉइस देयर टू मच टू वन टू मच टू वन टू मच टू मच रोज धूप से होते हैं स्पॉट्स और डलनेस। हम धूप से बचते हैं ऐसे, पर बचना चाहिए ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट UV डुओ सनस्क्रीन, जस्ट 2 फिंगर्स और सन डैमेज से नो वरी। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन C सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। ये है नॉन स्टिकी विद नो व्हाइट कास्ट। स्टे ब्राइट इन द सन ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट UV डुओ सनस्क्रीन। तैयार क्यों नहीं हुई? इन बालों के साथ। पर अगर बाल सिल्की हो जाएं, तो अब आप कहेंगी सिल्की बालों के लिए घंटों मेथी दाना और कलौंजी का ऑयल लगाओ। लेकिन मैंने कब कहा कि ऑयल लगाना पड़ेगा? नया लाइफ बॉय नेचुरली सिल्की शैम्पू मेथी दाना और कलौंजी के साथ, जो बालों को बनाए सिल्की और मजबूत। मेथी दाना और कलौंजी का कमाल, नो मोर उलझे बाल। डालडा कॉर्न ऑयल। इस 100% प्योर कॉर्न ऑयल में कुदरती तौर पर शामिल हैं फाइटोस्टेरॉल्स, जो दिल को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाए। डालडा कॉर्न ऑयल सिर्फ हेल्दी नहीं, हार्ट हेल्दी। जहां ममता वहां डालडा। क्या लाइट क्रीम दे सकती है डीप मॉइस्चराइजेशन? न्यू पॉन्ड्स हाइड्रा मिरेकल लाइट मॉइस्चराइजर सेरामाइड प्रो और विटामिन ई के साथ। इसका लाइट वेट और नॉन स्टिकी फॉर्मूला मॉइस्चराइज करे 10 लेयर्स डीप तक बिना चिपचिप। फॉर अल्टीमेट सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन, मिरेकल्स हैपन। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई। धोएं? इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन जिद्दी गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। आप भी उसाका बैटरी लगाकर अपनी जिंदगी बदले ना, क्योंकि याद रख काका, बैटरी सिर्फ उसाका। क्या लाइट क्रीम दे सकती है डीप मॉइस्चराइजेशन? न्यू पॉन्ड्स हाइड्रा मिरेकल लाइट मॉइस्चराइजर